force. Now I want to clear the topic. Now the topic is force. Now the topic is force and acceleration. My topic is force. Now the topic is force. Now the topic is Now the topic is force and acceleration. Now I want my Now I want to start the topic force. What is force? The force is an external factor which changes the position of a object or try to change the position of a object. The force is what? Now the topic is force. The force is what? Force is a factor which changes the position of a object or try to change the position of object. The force is a factor. Force is a factor which, which changes the position of a object or try to change position of object. The force is a factor. The force is a factor which changes the position of object or try to change the position of object. The force is nothing but the force is a factor which changes the position of object or try to change the position of object. Now note it. तो फोर्स क्या है? फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स एक फैक्टर या कारक है जो किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु का कि वह वस्तु का पोजीशन या स्थिति जो है बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। तो बल फोर्स या बल एक फैक्टर या कारक है जो किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु का स्थिति या पोजीशन बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। The force is a factor which changes the position of object
or try to change the position of an object. Now, the force is what? The force is proportional to, first, force is proportional to m, and force is the proportional to acceleration. The m is the mass of object. m is the mass of object. m क्या है? m is the mass of object and e is the acceleration of the object. e is the acceleration of a object. The m is the mass of object and e is the acceleration of object. तो दोनों को जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू acceleration. That that the force is equal to what? m into acceleration. This is the formula of mass into acceleration. This is the formula of mass into acceleration. तो फोर्स क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. Force is directly proportional to mass of the object, and force is proportional to acceleration. एंड दोनों को जब कंबाइन करके लिखेंगे, इन दोनों को जब कंबाइन कर देंगे हम, दोनों को जब इन दोनों को जब कंबाइन करके लिखते हैं तो क्या हो जाता है? ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू acceleration. That is F is equal to mass into acceleration. The force is a force is equal to the force is equal to product of the mass and acceleration. The force is directly proportional to force is directly proportional to the mass of object and directly proportional to acceleration of the object. Acceleration of the object. The acceleration is produced when force is applied on the object. Suppose this is the object, तो इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया. This is the force F, and this is the mass of object. And when force is applied on the object of mass m, then it goes into the motion. Try to change the position, and if object is in the motion, it will have some acceleration. So this is the formula of a force. The force is equal to mass multiplied by acceleration. Now to note down this formula. तो फोर्स क्या है? फोर्स जो हमारा है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो फोर्स जो
The force is what? Force is a vector quantity. इसको क्या हो जाए? Force is what? See, the force is a vector quantity. लिख क्यों नहीं रहा? The force is what? This is the force. Force and this is the mass and acceleration. The force is a vector quantity. The force is equal to what? ये पकड़ा। This is the force. The force, the force, you know that the force is equal to what? Force equal to mass into acceleration. This is the formula of the force. The force is a what? Force is a vector quantity.
Force is a vector quantity. Force is a vector quantity. It has both magnitude and direction. Okay? The force will have what? Force will have the force will have both magnitude and direction. Force will have both magnitude and direction. Okay? The force will have both magnitude and direction, and direction of the force is in the direction of acceleration. The direction of force is in the direction of acceleration. The force is a vector quantity. Force is a vector quantity, and force will have both magnitude and direction. And direction of the force is in the direction of acceleration. The force is a vector quantity, and direction of the force the direction of force. The direction of force is in direction of acceleration. Direction of force is in the direction of acceleration A. Both force and acceleration are the vector quantity, and direction of force in the direction of acceleration. SI unit of force is what? SI unit of force is Newton. It is represented by capital N. Okay? This is the SI unit. Capital N is the SI unit of force. It is represented by capital N. So, you know that the formula of force is F is equal to M into A. तो इसका यूनिट कैसे निकलेगा? F इक्वल टू M इज द मास, और मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? kg होता है. एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is also the SI unit of force. The kg meter per second square is also the SI unit of force. Force.
तो 1 न्यूटन, तो न्यूटन जो है, न्यूटन जो एसआई यूनिट है फोर्स की, तो न्यूटन इज आल्सो इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एसआई यूनिट जो फोर्स की होगी न्यूटन होगी, और न्यूटन को हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कर सकते हैं। आज का सीजीएस पद्धति में जो इसकी यूनिट होगी, सीजीएस पद्धति, तो एम के एस हो जाएगा। दिस वन इज द एम के एस यूनिट, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये तो एम के एस यूनिट है, एक मीटर किलोग्राम सेकेंड है ना। सीजीएस पद्धति में इसका जो यूनिट हो जाएगा डाइन। तो इन सीजीएस सिस्टम है, तो इन सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इन सीजीएस सिस्टम unit of force is dyne. In CGS system, unit of force is dyne. Now 1 Newton is equal to what? Now 1 Newton is equal to what? 10 to power 1 Newton equal to 10 to power 5 dyne. ये होता है, this should be remembered. तो 1 Newton equal to 10 to power 5, 1 Newton equal to 10 to power 5 dyne. One Newton equal to 10 to power 5 dyne. And dimensional formula of the force is what? Dimensional formula of force is equal to what? Bracket में m l t minus 2. This is the dimensional formula of force. See? This is the dimensional formula of force. ये कैसे आता है, ये फार्मूला कैसे आता है, इसको देखना है। द फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कैसे आता है ये देखना हमको। तो फोर्स इज इक्वल टू होता क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ v टू v अपॉन टी। एक्सेलरेशन क्या होता है, v अपॉन टी, डेलिवरिंग चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम होता है। तो वेलोसिटी का जो होता है वो वेलोसिटी का जो ऐसा है वो डायमेंशनल फार्मूला हुआ एल टी माइनस 1 अपॉन टी हो जाता है। तो एक्सेलरेशन का क्या डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू एल टी माइनस 2 हो जाता है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस 2 हो जाता है। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन। ना फोर्स से क्या हो जाएगा, तो फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का क्या हो जाएगा एम, मास का क्या हो जाएगा कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन का रख देंगे हम एल टी माइनस 2। तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का माना जाता है इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स।
तो इससे मैम इसका यूनिट निकाल सकते हैं फोर्स का। डायमेंशनल फार्मूला याद रहेगा तो इसका यूनिट निकाल सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला यदि याद रहेगा तो फोर्स का यूनिट हम निकाल सकते हैं। तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, एम के क्या होता है केजी, एल का मीटर हो जाएगा, और टाइम का क्या होता है सेकेंड इनवर्स। तो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा हमारा फोर्स का। तो फोर्स की यूनिट हमारी क्या हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम क्या कर सकते हैं न्यूटन। तो दिस इज द ऑल अबाउट फोर्स। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये फोर्स का है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट फोर्स का है। इस तरह से फोर्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया। नाउ हम एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे कि एक्सेलरेशन होता क्या है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? नाउ द टॉपिक इज एक्सेलरेशन। Now the topic is acceleration. The rate of change of velocity is called as acceleration. तो acceleration क्या होता है? Rate of change of velocity. Rate of change of velocity is called as acceleration. Rate of change of velocity is called as acceleration. That is del v over del t. या इसी को सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डी वी ओवर डी टी भी कह सकते हैं। दिस इज द formula of acceleration. The rate of change of velocity. The rate of change of velocity is called as acceleration. The rate of change of velocity is called as acceleration. The acceleration is also a vector quantity. 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 Okay, now note down this. Acceleration हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका यूनिट कैसे निकालेंगे? तो ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू वी अपॉन टी होता है। तो वेलोसिटी का जो यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड हो जाता है, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ acceleration. The SI unit of acceleration. Meter per second square is the SI unit of acceleration. ठीक, और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का? डायमेंशनल फार्मूला जब इसका निकालेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन इज व्हाट एल टी माइनस टू। यहाँ से भी इसका यूनिट हम निकाल सकते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन इज दिस एल टी माइनस टू। डायमेंशनल फार्मूला आ गया यहाँ से। एक टॉपिक और एक पॉइंट और है, असल फोर्स ऑफ मोमेंटम में क्या चीज होता है? तो मोमेंटम क्या होता है? ना द मोमेंटम मोमेंटम
मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम भी होता है। इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी मोमेंटम। तो मोमेंटम जो होता है मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो यूनिट निकालेंगे, इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारा? मीटर इंटू मीटर अपॉन सेकेंड हो जाएगा। दैट इज मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड हो जाएगा। मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो मीटर स्क्वायर अपॉन यूनिट इज द मोमेंटम। तो मोमेंटम की जो यूनिट होगी क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। Now note down this. The meter square upon second is the unit of momentum. Now इस टॉपिक को हमने नोट कर लिया। अगली बार इसमें क्या करना है कि ना P is equal to mass into velocity. तो now we apply del P, change in momentum. Now the change in momentum del P is equal to m, तो स्केलर क्वांटिटी है। मास इज द स्केलर क्वांटिटी, देयर इज नो चेंज इन द मास, ओनली चेंज इन वेलोसिटी। ठीक। डेल पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल वी रहता है। अब डेल पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल वी। नाउ व्हाट हैपन? नाउ डेल टी से हमने दोनों पार्ट डिवाइड कर दिया, तो डेल पी ओवर डेल टी, डेल पी ओवर डेल टी इज इक्वल टू व्हाट? डेल वी ओवर डेल टी इंटू डेल पी ओवर डेल टी इज इक्वल टू मास एम इंटू डेल वी ओवर डेल टी हो जाएगा दिस। ठीक। तो डेल वी ओवर डेल टी इज व्हाट? डेल वी ओवर डेल टी इज the acceleration. We have studied the rate of change of velocity. Rate of change of velocity is what? Acceleration. The rate of change of velocity, we have studied that rate of change of velocity is acceleration. So del v over del t is equal to mass into acceleration. And we have studied mass into acceleration is the force. So del v over del t is this. ठीक। the rate of change of momentum is force. Now we have proved that force is the rate of change of momentum. Now here we have proved that force is the rate of change of momentum. Hence what? Hence force is also what? And force is also defined as rate of change of momentum. Rate of change of momentum. Hence we have proved here that force is the rate of change of momentum. Hence here we have proved that force is the rate of change of momentum. Hence here we have proved that force is the rate of change of momentum. The force is the rate of change of momentum, and therefore force is equal to del P over del T, that equal to mass into acceleration. ठीक। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि
The force is the rate of change of momentum. The F is equal to del P over del T is equal to m into acceleration. यदि फोर्स कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं कार्य कर, यदि ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, इफ if no force, if no force acting on the object, if no force acting on object, then what happen? If no force acting on the object, then if no force acting on the object, then if no force, if no force acting on the object, then F is equal to 0. Then here we have del P over del T is equal to 0, and therefore we have, then here we analyze that at del P is equal to del T इधर आ जाएगा, multiply the del P is equal to 0. That means पापा उधर जा रहे हैं. Then what happened? P2 minus P1 is equal to 0. That is P2 equal to P1. P1, that is what? That is the M2 V2 is equal to M1 V1. This is the law of conservation of momentum. This is what? This is the law of conservation momentum. चलो, this is all about the concept of momentum, force and acceleration. Now we will study next time. हे, अब एक और दिन अकेली ना बिताएं।